everyone. Welcome to another episode of Wetcast, your go-to space for real conversations about matchmaking, love, and relationship in today's world. We know it's been a while since our last episode, but what can we say? Our matchmakers were busy creating dream matches during the Shadi season. On that note, I am thrilled to welcome back Sachin and Shalu, the dynamic duo behind Make My Lagan, who have been at the forefront of modern matchmaking. Also joining us today is a very special guest, someone who's worn many hats, from being Miss India Universe to hosting lifestyle and sport shows to giving a TEDx talk that resonated with so many. She's a speaker, she's an actress, she's a voice of reason when it comes to personal growth. She's also an astrologer. She is Nikita Anand. And today we are diving into a topic that has fascinated and influenced countless relationships over generations, that is astrology in matchmaking. So, can the stars truly determine our fate in love? Or is it just another layer of tradition wrapped around, modern relationships? Let's find it out. Hello. Welcome back. And ma'am, thank you so much for joining us for this episode. Very quickly before Sachin and Shalu say anything, I'll give you a very brief context of Wetcast. So they wanted to do something, basically, one show that covers all aspects of love, matchmaking, and relationships. Because, people these days, they run away from the concept of arranged marriages, and they wanted to establish the fact that, things are changing, times have changed, and so have arranged marriages. So, of course, all gratitude is to these two lovely people. The courtesy goes to them for Wetcast, and thank you so much for, agreeing to do this episode with us. Thank you so much for inviting me. Thank you. And just because we wanted to cover each and everything on Wetcast, I think astrology in matchmaking is very important. We can't have an episode on marriages in India and not discuss astrology, only matching and everything that comes with it. So let's dive into it. So my first question is for the both of you, whosoever wants to answer me first. You see, Sachinji and Shaluji, in traditional Indian families, कुंडली मैच करना and astrology, astrologer के पास लाना, जन्मपत्री दिखवाना, गुण दोष सब कुछ मिलवाना, it's very common. But these days, because you people have told me such progressive stories in the past two episodes, these days when you, approach your clients or when they come to you, are the Gen Zs and are the millennials, are they insistent on the astrology process कि हाँ, अगर कोई पसंद आ रहा है, if we like the boy, if we like the girl, then let's do the astrology in the match. I think if you talk about a boy and a girl, Right. especially, so I think so, like, they hardly know the subject. Or you don't know the subject. Yeah, so it is only families, parents. Okay. They're very keen on, matching the kundlis and horoscopes. बट हमें ऐसा लगता है कि ना मतलब लाइफस्टाइल को मैच करना बड़ा जरूरी है रादर देन मतलब पत्रीस तो ठीक है वो है बट अभी इन दिस मॉडर्न जनरेशन टाइम्स देयर पीपल्स लाइफस्टाइल्स देयर वैल्यू देयर कल्चर दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट टू मैच फर्स्ट तो फिर उसके बाद आप प्लेसमेंट्स को देख सकते हैं मतलब मैं तो ऐसा सोचता हूँ बाकी जो एक्सपर्ट हैं निकिता जी ये बताएंगे कि कैसे बैलेंस हो सकती है ये चीजें Ma'am, for you, I have a very separate question. Okay. Because, when they told me that you're going to be here for this episode, I watched your TEDx talk. Okay. It is titled Uncomplicate. Yes. And it talks of the I can't syndrome, which I have in life. I am generally like, oh, I can't do this, I can't do that, and I can't do this and that. But ma'am, would you say when it comes to astrology, this I can't syndrome is a very big problem. So it is in a way limiting beliefs. Do we as a society have to, navigate through astrology in matchmaking? Like, do we overcomplicate our life when it comes to marriages and astrology? Okay, before I answer that question, just a very brief background about myself so that might help you in the perspective I have with regard to my life and also with regard to astrology. Okay. So I'm a former Miss India, right? I'm from the glamour industry. And like you, I love presenting. So I have two loves in my life. One is presenting, anchoring, and the other is astrology.
and I've been into Vedic astrology since the past 4 years. Okay. I've always been fascinated by astrology, so I've always been in awe of it because I've always felt there is something in astrology. कैसे करते हैं? How do you know? Yes, So, for how do you example, know? if I look at you, I will get a sense of your planetary combinations and placements without you opening your mouth and even saying a word. When you start speaking and you give me any information about yourself or any event, anything, that again gives me a lot of information. And Shalu right here is first-hand example, because when I went up for the first time, इनको देख के पता चल गया था कि इनके लगन में ये है. Yes, it's know, true. because Matlab, she's- I was shocked when we met for matrimonial purpose, and she told me 2-3 things, and then I was कि मेरी तो अभी date of birth time भी नहीं दिया See, मैंने. now नहीं देखी. But Now I I'm did very see. fascinated. Now you're telling me that you have looked at my face and you can tell two things about me. So I'll tell you, the point is that people don't understand astrology. Rather, a majority of people, I won't say everyone, because we make a lot of generalizations these days. So astrology is not what a lot of people actually think it is. So what is the perspective that you think general public has about astrology, or maybe the Gen Z or the millennials they have about astrology? rather, There's no you know dismissing what that I'll do way. is I'll throw this back to you. Why don't you tell me what is your idea of astrology? आपको क्या लगता है? मतलब कुछ होगा ना, किसी से मतलब क्या फर्क पड़ता है? Planets हैं, how does it affect me? How does it affect you? उससे क्या लेना देना? That is usually the thought that comes to everyone's mind. कि It's how's what fascinating. happened? It's fascinating, of course. मतलब That I आप understand. planets तो सबके लिए हैं, तो आप देख के क्या बताओगे? How can you tell me anything about my life? We can tell you everything. We can tell you everything. Yeah, You she just told. need to know how to read the chart. So coming back to your first question. You're scaring See, me. you know, सब गीतिका सोच रही कि वो पहले मैं अपने बारे में पूछती हूँ. so coming back to your original question, which was about uncomplicate. Yes. Do we overcomplicate our life? You know, thinking The so much purpose about of astrology, and I'll tell you why I got into it and why I have such strong faith and believe in Vedic astrology is from my own personal experience. It's not hearsay. It's not what someone has said. किसी ने कहा होगा. No, it's my personal experience. It's not कि पढ़ा है, अच्छा तो ये होना चाहिए. So it's not even theoretical. वो तो है because we have to study. तो पढ़ा है. But I have seen it practically in my life with everything. So the purpose of astrology, right. as far as I'm concerned, is to simplify your life. And I'll tell you the most beautiful thing about astrology is it answers your questions. You have questions, they have questions, our team here, all of them have questions. But will it tell me? It will tell you. Will it tell me should I marry this boy or not? Absolutely. Absolutely. It'll tell you everything. So the purpose of astrology actually is this. It answers your questions. Now it depends on what your intent is. आप किस intent के साथ किसी के पास जा रहे हो ना? आजकल बहुत लोग कहते हैं नहीं इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता. भाई आपका इंटेंट भी तो वैसे ही होगा ना. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फेथ के साथ नहीं जा रहे. If you are not approaching someone with faith, it could be anyone. I'm not talking only about an astrologer. It could be any consultant. Yes. You've created that block. You've created that resistance. So even if you get the best advice in the world, you will be non-receptive. So that is the first mistake that people do. They don't have faith. And if you don't have faith, आप मत जाओ. There is no compulsion at all. Now, when it comes to marriage, look, marriage is the most significant event in any person's life. Is it a compulsion there? Because traditionally it's been a compulsion, right? नहीं, compulsion नहीं है. There is no compulsion whatsoever. Marriages. No. There is no Tradition. compulsion. See, if you have faith in something, if you are seeking an answer, तभी तो आप किसी के पास जाओगे ना. अगर आपको जवाब ही नहीं चाहिए, तो आप क्यों किसी के पास जाओगे? You're not going to go to anyone. So it's that philosophy. If you don't believe, let's say you don't believe in astrology. If you don't believe in the concept of astrology, then don't go to an astrologer. There's no need. सेम हैपन्स विद मी ऑल्सो. जैसे लोग कई बार हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं 10 जगह मैट्रिमोनी में पैसे देकर आया हूँ, मुझे पता कुछ नहीं होना, फिर भी मैं आपके पास रजिस्टर करा रहा हूँ. तो मेरा फर्स्ट उसको आंसर ये रहता है, देन व्हाई यू आर कमिंग टू अस? अगर आप इस नेगेटिव थॉट से मेरे पास आ रहे हो तो सॉरी, वी आर नॉट जस्ट हेयर. जब आप एक फेथ से आएंगे हमारे पास और हमारे पास सोचेंगे कि ये हमारा काम करा सकते हैं, हम तभी करा पाएंगे. और अगर आप हमारे पास इसी थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं कि चल यार ट्राई कर लेते हैं, 10 जगह पैसे दे दिए, एक जगह और सही होना तो कुछ है नहीं, तो मैंने कहा कहीं कुछ नहीं होगा, सॉरी, डोंट वेस्ट योर मनी. Acha, the clientele that you have and the people who approach you,
seeking matches for themselves, how kya percentage hai, how important is it is for them to go to an astrologer before finalizing the match? 95% people are following this. So people even don't believe in it. Yes, even जैसे पहले लोग बोलते थे कि सरदार लोग बिलीव नहीं करते, वो संडे देख के शादी कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. नहीं आज नहीं की नहीं, डेट आप में देखो ना, if you talk about Sikhs, if you talk about Sardars, we believe in Guru. Yes. तो faith भरपूर है. So there is no, it's not that the faith is lacking. They have more than 100% faith. I'm a Sikh myself, so I can say that, right? So astrology also, कौन आपको advice देता है? गुरु दे रहा है ना. If we look at who the planet is representing, तो गुरु ही है. तो अगर आप faith के साथ जाओगे, आपकी चीजें अच्छी तरह जाएंगी, आगे जाएंगी. And the point that I was making earlier is that marriage is one of the most significant events in your life. Why would you not want guidance on it? Why not? Okay. Why would you not want someone to tell you, look, I think this is a right match for you. I think this is not the right match for you. What is astrology? Astrology is a guiding tool. ज्योतिष क्या है? हम simply light दिखाते हैं आपको. So, ma'am, layman's terms, ये क्या है fully? What is astrology? What is this Janam Patri? And what are we seeking answers for? Like, what does this entire process look like? What does it mean? ऐसा क्या है हमारी कुंडली में? So Vedic astrology is basically the energy of the sky. जब हम कुंडली की बात करते हैं, what is the horoscope? It is the blueprint of the sky at the time of your birth. Very simply put. ऐसे कुंडली बनती है. Where they ask for your birth details, and on the basis of your birth details, there are a few parameters, which is why it is so accurate. Right? We take few certain birth details and we cast a horoscope. Now, what that horoscope shows us is कि at the time of your birth, planetary combinations क्या थे? And astrology says that these planets are also energy. They are also energy. Why are you different from me and why am I different from them? We are ruled by the same planets. But फर्क कहाँ आता है? Because of the planetary combinations and the placements in everyone's individual horoscope. So, every second makes a difference. Every second makes a difference. It actually does make a difference. but sometimes एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सेम प्लेस पे दो बच्चों का जन्म हुआ है, वन इज इन द रिच फैमिली, वन इज इन द ऑन द रोड, बट दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट चलती है. But यहाँ पर कर्म भी तो आते हैं. See, when we talk about astrology, right, it is basis. Why is there a concept of past life karam? Why does a family, how does a family come together? Right? And if you, I mean, astrologers will obviously know this because we're used to seeing charts. A family, all members of a family will have one particular, I wouldn't say problem, but you will see that all of them will have a same combination. अब ये combination कब बना है? Like जब a आप, flaw. sorry? Is it like a flaw? It's not necessarily a flaw. So I'm not saying it's a One flaw. trait. Yes, one trait combination. Okay. Because we read combinations, right? So on the basis of your karam, your past life karam, right? See, your soul has to take birth. Yeah. The soul is changing body, right? So the soul basis on क्या आपका कर्म रह गया है. Why do you take birth in this life? To fulfill an experience. और कोई तो purpose है नहीं ना, आपने experience करना है, soul ने experience करना है. That is why you're there on this earth. If there's no experience, then you won't be here. So depending on your past karam, you take birth into a body which will allow you to experience those, right? So which is why all family members are joined by a certain combination. This is how we see blessings in a chart. In a family, this is how we see curses. Curses bhi aate hain, blessings bhi aate hain. There's a whole lot of things that we can see. So we are joined in some way or the other, right? Okay. So when we talk about Kundli and when we talk about Kundli matching, why is it important? Where does astrology come into all this? Is because, like I said earlier, it's a guiding tool. Your marriage is the most important event in your life. You will be sharing your life with your partner, with a certain individual. So the concept basically boils down to this. It is a question of seeing whether the energy of this person is in sync with yours. Because क्या होगा ना, when there is a union, the stars of two people affect each other massively. तो या तो आपको ऊपर लेके जाएंगे या आपका downfall भी हो सकता है. Okay. That is the concept. Now, here I want examples from you too. Have you had any, cases
where the stars aligned and it led to a failed marriage, and vice versa, if the stars didn't align and yet the couple is happy. Yeah, there are so many examples. अभी but कई बारी I have seen कि आपको पता होता है कि आपकी कुंडली नहीं मिल रही है, बट डेस्टिनी आपको लेके भी जाती है. Yes. हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि एक बिकॉज इन आवर लाइफ टाइम्स जैसे हमने 3-4 डिवोर्सेस हुए होंगे, बट उनके केसेस में पीछे क्या होता है कि एक बार एक फैमिली ने जैसे यस करते ही उन्हें आया कि ना बॉय ड्रग्स लेता है. देन द पेरेंट्स केम टू नो कि लड़का ड्रग्स लेता है. देन दे कॉल्ड अस, हमारी एक मीटिंग हुई एंड आई आस्क्ड देम कि अगर वो ड्रग्स लेता है यू शुड ब्रेक द रिलेशनशिप हेयर. Okay. हम लोग आगे नया रिश्ता देखेंगे. एंड फैमिली सेड कि नहीं, हमने तो अपना फंक्शन डिसाइड करा हुआ है, हमने अपने बता दिया रिलेटिव्स को कि हमारा 1 महीने के बाद रोका और है. इनकी कुंडली मैच थी. कुंडली मैच थी. यस, हॉरोस्कोप वाज फुली मैच्ड, बट पता चला कि लड़का ड्रग्स लेता है. एंड उसके बाद क्या हुआ कि आई टोल्ड देम कि जिस डेट को आपकी शादी है, अगर आपको उस डेट को शादी करनी ही है तो बेटर, अगर हमें कॉम्प्रोमाइज करना है तो हम किसी और पार्ट पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना. अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, 1 महीना है ना हमारे पास, आई लीव ऑल द वर्क, आई स्पेसिफिकली वर्क फॉर यू. हम उसी दिन रोका करेंगे जहाँ जो बच्चा ड्रग्स ले रहा है उसकी बजाय हम किसी और चीज पे कॉम्प्रोमाइज करके रिश्ता करेंगे अगर हमें करना ही है. देन दे सेड ओके. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई रीच्ड ऑफिस बाय 9 AM. जाके उसके लिए काम कर रही हूँ. 10-12 रिश्ते ढूंढे कि नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. और उसके बाद क्या होता है कि 1 o'clock आई गॉट द सेव द डेट फ्रॉम द फैमिली. आई वाज शॉक्ड कि कल रात को तो हमारी मीटिंग हुई थी और रात को डिसाइड हुआ था कि हम सुबह ये रिश्ता मना कर देंगे और मेरे पास सेव द डेट आ रहा है. आई कॉल्ड हर फादर. आई सेड कि भैया ये क्या कर रहे हो आप. ही सेड नहीं, हमने घर में बैठ के रात को डिसाइड किया, क्योंकि उनका ना बहुत टाइम से रिश्ता नहीं हो रहा था ड्यू टू द प्लेस जहाँ पर वो रहते थे. लोगों को वो एरिया पसंद नहीं आ रहा था. एंड दे सेड कि ना इतने टाइम से रिश्ता नहीं हो रहा, अब मुझे अच्छा रिश्ता मिल रहा है. लड़के एक बच्चा है, उसकी 500 गज की कोठी है, वो अच्छे एरिया में रहता है. एंड माई डॉटर इज सेइंग कि मैं उसको प्यार से चेंज कर लूंगी और हमारी पत्री तो बहुत अच्छी मिली हुई है. आई सेड इट्स योर विश. और हुआ क्या कि वो शादी हुई एंड शादी के 6 months के बाद ही वो डिवोर्स हो गया. द गर्ल ट्राइड, उसने बहुत कोशिश करी, बट उसकी हैबिट को वो चेंज नहीं कर पाया. उसने रिहैब सेंटर भेजा, उसको चेंज कराने की कोशिश करी. देन बाद में नाउ दैट गर्ल इज इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड दिस थिंग. तो एक बारी अभी हम मिले तो देन शी सेड दीदी इट वाज माय डेस्टिनी, जो मुझे पता होने के बाद भी वहां लेके गई. और हम लोगों ने उनको 3 बार मना किया होगा अलग अलग ओकेशंस पे, क्योंकि रेड फ्लैग्स दिखने लगते हैं कि मत करो. एंड शी वाज लाइक नॉट कंफर्टेबल. फिर भी वो चीज़ें हो रही थी. और आज भी उस फैमिली के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशनशिप है, वो हमें ब्लेम नहीं करते. वो कहते हैं आपने तो हमें बहुत अच्छा एडवाइस किया, बट वो शायद हमारी डेस्टिनी थी कि ना चाहते हुए भी हम वहां गए. तो So, ऐसा हम भी निकिता होता है कि तो कई बार भी- आपकी डेस्टिनी आपको जानबूझ के, अगर आपके कुछ लिखा है, कुछ कार्मिक अकाउंट थे उस पर्सन के साथ, तो वो लेके जाएगी. हाँ, how much डेस्टिनी का थोड़ा स्पेस होता है एस्ट्रोलॉजी में? सब डेस्टिनी है. आपके हाथ में क्या है, आप बताओ. डू यू नो टुमारो व्हाट्स गोना हैपन विद यू? यू डोंट नो. No, I don't. No, you do. So that's exactly my point. Destiny is there. You cannot refute it. You might try to use your logical mind and say, "सब मेरे control में ये कर दूं." Nothing happened. But free will is also there. Free will is also there in your chart. There are things which you can control. The amount of practice I want to put in something. Let's say I want to work on a skill set. जितना मैं practice करूंगी उतना ही तो उसको मैं Nurture पुनर कर सकती हूँ, पाओ. right? So that is also free will. That is also in my hand. The amount of hard work I put in is in my hand. The amount of service I want to do. मेरे क्या करें मैं? How much hard work am I putting in? All that depends on me. But there are some things which are not in your control. Not in your control. That is where the whole concept of destiny and something you have to undergo. You Look, have but to ऐसे undergo. भी That is कहते there. हैं, ऐसे भी कहते हैं कि आप पैदा तो हो गए अपनी किस्मत लेके, पर आप उसे बदल सकते हो अपनी मेहनत से, अपने Yes, अपनी yes, तो yes. वो फिर वो देखो, कैसे होता है? एक चार्ट होता है. See, so very briefly, I'm not going to get into too many details because we don't want to have a technical conversation on astrology. तो एक होता है आपका राशि चार्ट, which is what I was talking about, that how we cast a horoscope ना. So that is your main chart, which is called as the राशि चार्ट. अब इसके ना राशि चार्ट के further subdivisions होते हैं. So out of that एक आपका भाग्य का चार्ट होता है. There is a chart which is said this is your destiny chart, भाग्य का चार्ट है. Then there's another one from which we see कर्म. तो कर्म तो आपके हाथ में है ना.
वो तो आपके हाथ में है, आप अच्छा, जितना लगाओगे. What does a perfect chart look like? Is There there is no anything but a perfect chart. perfect There is chart? no perfect chart. Really? No. And what is gun and dosh? Chhattis gun. We heard. अच्छा, आप I watched अष्टक मिलान- movies growing up. अच्छा, Chhattis अच्छा, gun अच्छा, मिलनी आप चाहिए. आप गुण मिलान की बात कर रहे हैं, which is basically to do with the nakshatra of the moon. Okay. Now, when I see charts, okay, the way I have learned, from whom I have learned, and the way we have been taught to see charts is different when it comes to matchmaking. तो जब हम कुंडली देखते हैं with the purpose of matchmaking in mind, we do not rely on gun matching. We don't do that. What we are looking at is a more comprehensive and detailed analysis of two charts. तो इसमें there are few planets which are very very important. सबको शुक्र के बारे में तो पता है. Venus, right? Because Venus is a significator of your spouse, usually, or the person of the opposite gender who comes into your life, partner, spouse, right? So we have to look at the Venus. Now at the same time, before we look at the Venus, we look at Mars, जिसे हम मंगल भी कहते हैं, right? Now why we look at Mars is because Mars is your personality. It is who you are. Mars defines my physical outlook in life, my personality, the way I approach things, the amount of courage I have, whether I'm aggressive, whether I'm not aggressive, क्या मैं lead करती हूँ, क्या मैं पीछे रहती हूँ, am I very active as a person, क्या मैं passive हूँ, all those come under the domain of Mars. तो सबसे पहले हम मंगल को देखते हैं. So there is a detailed flow chart. जब भी हम marriage और कुंडली matching की बात करते हैं, there is a detailed flow chart that we take a look at. I don't rely only on gun matching. I don't do that because that's the way I've been taught. So we do a comprehensive analysis. Because like I said earlier, देखो, it is a question of matching energy. Right. तो अगर आप energy देखोगे और chart को एक बार देख के energy समझ आ जाती है कि this is the kind of person this individual is, और आप match करना चाह रहे हो with someone who has a similar energy, even if it is a different energy, will the two people complement each other? जब आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ, देखो आपकी खामियां तो होंगी, you're going to have some flaws, you will have some strengths as well. Who do you look for? Someone who comes and who will complement, Exactly. make up for what you lack, right? So that whatever is happening, this partnership that you want goes well and it's in balance. Right. So it's the same. Marriage भी तो same ही है ना. You have someone coming into your life and you're going to share your life with someone. It has to complement you and vice versa. And it has to lead to your growth, not to your downfall. Because ऐसे भी cases होते हैं. That is why astrology is so important when we talk about matchmaking. Both of you should carry her everywhere. Next matches, लड़का लड़की मिल रहे हैं. Okay, one question. बाद में मिलना. Yeah, one question First, I have. Nidra will sit and she And observe the two people coming, inside the room, and she'll scan their Mars and Venus. And then correct. you guys Right, And other let's planets say- and other planets. and other planets. Yeah, no, I don't know of. Okay. Now let's say horoscope is matching like very well to the families. Both the families are getting along, and boy and girl is also complementing each other. और फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ घर के छोटे छोटे मतलब बच्चों की पत्री तो मैच हो गई, but what about parents and families? The kind of environment girl has in her mind. So we can see the background now from the Yeah. horoscope. Okay. तो Plus कई बार horoscope से ना कई आपको सब दिखता है. कई बार क्या होता है कि adjustment become very difficult because of the parents. So On the boy and girl. I totally understand your point, which is a very important factor. Yeah. But in this flow chart जो मैं अभी बता रही थी कि एक flow chart है. So the first thing we look at is we look at Mars, we look at Venus, and we look at a whole lot of other things. जिसमें से one is environmental factors. कि आपकी शादी को influence कौन कर रहा है? कोई है भी influence करने वाला कि नहीं है? A lot of people don't have external influences. They don't have that. लेकिन in many cases you will have external influences, so we can see that. क्योंकि हमारी इंडिया में आज भी देखो दो परिवारों की शादी होती है, Yes. दो फैमिलीज एक साथ जोड़ती है Yes, और exactly. सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं, How do you analyze the know- background? तो वो कैसे होगा? We can. So do you see the kundli of every family member? Not for every family member. When you look at one horoscope, right, there are 12 different houses. 12 अलग भाग होते हैं, which represent different aspects of your life. So we can see I know how your father will be or your relationship with your father will be.
just as an example. I can see how it will be with your mother. Hmm. I can see how it will be with your siblings. I know how you will interact with your neighbors. Okay. I can see that from the chart, right? That's my point. The point is right now, okay, people don't know what all you can see from a horoscope. Astrology is so vast and it is so deep. It's like, will you ever be able to see the depth of the ocean, or will you be able to cover the vast expanse of an ocean? No. But that is the depth of astrology. वो अलग बात है कि आपको देखना आना चाहिए. तो my thing is कि आप, I think the first thing you should do is कि आप थोड़ा ना due diligence कर लो कि आप किसके पास जा रहे हो, किस astrologer के पास जा रहे हो. Yeah, that's quite That is important. a very important thing. Yes, because Then there's so go many for your- astrologers these Yes. days. Who should you Do be? your due diligence. Now, what are you seeking? Are you seeking shortcuts? तो आपको shortcut वाला मिलेगा. Like the apps, डाल दो. See, I don't believe in it. For me, and the thing is, that's why I don't have those experiences. मेरे पास ऐसे experiences नहीं हुए because मेरा कभी thought process यही नहीं था कि मुझे ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, मैं इसको पलट दूं, इसको बदल दूं. I have never thought that way, so I've never attracted those people. My thing has always been long term. Like I am a seeker. So for me, if there has been an event that has happened in my life, ये क्यों हुआ? मुझे ये जानना है. And if that is the question, ना, then that answer will also come to you. Na? So that's the kind of energy I'm attracting. Na? Someone who's going to give me that answer rather than which phone will I buy. Just as an example. Who the answer is coming from is very important in this Yes. case. Yes. So True. how do we do that particular due diligence? Because see, every news channel has a specific astrology segment. Yes. I don't know how much TRP that gains, but people are looking out for it. Every newspaper has a horoscope segment. People do read it. So how do we differentiate कि किसके पास जाना चाहिए? Answer seek करें तो किससे करें? देखो आपको क्या आंसर चाहिए? Do you want a Jupiterian answer in the sense, do you want कि No, आपको कोई no. advice दे? No, you, और सही advice दे? क्या? No. What are you seeking? no, you give me investigative journalist वाला answer. कि due diligence कैसे करें? That's my energy, you know, because that's my energy. My energy is not in the phenomenal things. ये झटपट ले लो, वो झटपट ले Investigative लो. what I want. See, that's where my intuition also comes from. Na? It's the same planet which gives that. Okay. So you're going to get the same kind of answers. That's what I'm saying. That's why I keep coming back to this. कि ये सारा खेल ना energy का है. And you keep scaring me. Why am I With all scared? the I should be putting you You at know, ease. with everything that you're saying, I am questioning my insecurities in life. That how do I perceive the world? How do I meet the people? And how do how do I perceive them? Now, I'm just thinking of all my all the conversations that I've had. In fact, you know what? Once I did go to an astrologer. I mean, I didn't go to that person. He is a friend's father. And he told me such bad things about my this Oh. thing. Like he asked for the place, Birth details, place yes. of birth, the time of birth. Very accurate it has to be apparently. So I called up my mom and I told her, please tell me all these things. And my mama told me, are you trying to seek your astrology Yeah. details? I was like, how do you know? She was like, I am not a fool. No, I know कि ये details सभी पूछते हैं. So he gave me, very fearful. I got a very fearful perspective of life after Right. that. So I sort of adopted that outlook that I don't want to seek any answers from anyone. Then I took the karma approach that, I will I will don't- be what I I don't blame you. I don't blame you for your outlook. I'll give you another example. So I met someone through an acquaintance and I didn't know anything about her. The only thing she happened to say from her mouth at that point of time was कि ऑफिस जाना है and it's a law office. तो मैंने बस वही सुना law office. So she said that. So instantly I was running combinations in my head because I love astrology, right? So that's something I'm going to do subconsciously. वो तो होगा. So I started running combinations and मेरे मुंह से निकल गया. I happened to say it out loud कि अच्छा तो छठे घर में क्या है? So because I was just thinking out loud. I was doing the maths in my head. And this girl knew little bit. So she said कि मेरा केतु है. So I looked at her and I said, it's not possible. She said, नहीं. I said, it's not possible. So she says, okay.
then I think this is what it, I think so. I said, do you know astrology? She said, I haven't studied it, but यहाँ से थोड़ा सुना, वहाँ से सुना. You know, which happens with a lot of people, ये कुछ सुना and stuff like that. So I said, नहीं होगा. It's not possible. And I said with full confidence, it's not possible. So she says, अच्छा ठीक है. I said, you give me your birth details. Because I have an app on my phone. So she gave me her birth details. I fed in the thing. And according to her birth details, it was showing whatever she said, what it was showing. I said, your birth time is not right. It is not possible. Okay. So I said, call your dad. Call your dad and ask him birth time kya hai. Okay. So she immediately called her dad. Dad happened to answer. So she says, listen, can you confirm my birth details? What is my birth time? So dad said something. So then वो आया and I said, ये तो नहीं है आपका birth time. So she says, नहीं ये वाला है. तो हमने वो किया. There was no Ketu in the 6th house. So I said, ये astrology है. आप देख के सुन के all around you, it is all there. Manifestation of planets is around you, right? So I saw her chart. So I said, ठीक है, we've moved on from that. That is wrong. This is what it is. Now we've cast a right horoscope for you. This is what your chart looks like, right? I saw a combination, which was a very serious combination for her. Very serious. I don't know this girl, right? And now that is a combination to be a little wary of. मतलब आपको उससे थोड़ा concern होना चाहिए because it's health related. Okay. Now for me it's very simple to tell someone you are going to get cancer, right? But I can't do that to you. If I'm meeting you for the first time, I can't just go outright and say, listen, you're going to get cancer. I can't do that. This is not how I've been charted. We'll come to that later, but let me complete my story, right? So I said, this is a bad thing. So all I told her was, look, take care of your lower abdomen. Okay. Because you'll have health concerns there. That's what I told her. That is my job. That is me guiding someone, right? I'm being preemptive about it because I'm seeing it just now. So पहले तो कुछ बोले ना. She didn't say anything. Right? Now, I've seen the combination, but I don't want to scare you, right? Because for me, my point is, let me guide you. If there's something, if you go and get a checkup done, get it done. Because I'm seeing something happen there, right? So the friend that I was with, he told her, he says, why don't you tell her? So I was just looking at both of them. And, you know, he says, why don't you tell her yourself? So she says, I got operated for cancer here. Oh. So now you know that, right? It's very easy for me to go and say something like that's maybe that's why some people don't believe in it because it scares you, you know. But now see, it's for me, it's my duty. If I've seen something, it's my duty to warn you, right? But at the same time, I've got to try and balance it out a little bit also, right? But because at the end of the day, look, I'm helping you. If I've got something from above and I can help you in any which way and guide you, I'm guiding you. I don't want to scare you, but that's what I'm seeing. But you have to come with a faith. Without faith, nothing will happen. But you know, also, क्योंकि हम ये faith की बात कर रहे हैं, let me tell you something. आपको guru, astrologer, anyone who is playing the role of someone who's guiding you or counselor, mentoring you, right? Teachers, they all come under the scope of guru, the planet guru, right? Jupiter. You will not be able to get guru in your life unless your karma allow it. It's इतना आसान नहीं है. कितने लोग हैं जिनको मदद नहीं मिलती at the right time because they don't have that punya in their life. ये भी है. Correct. True. सबको नहीं मिल सकता और astrology सब नहीं कर सकते. Everyone can't do it. This is God's gift. I can study for years, but there is intuition. Intuition cannot be taught. That depends on my prayers. I know what I have to do every single day, right? Study, yes, I have to study. But for my intuition, it's a lifestyle change for me. So I've changed because I've been into spirituality even before, so my lifestyle is completely changed from what it used to be earlier. तो ये आपको गुरु मिलना, टीचर मिलना, advice, counselor, ये भी आपके भाग्य में होना चाहिए तभी आपको मिलेगा. It's not that simple. Right. You know, on this note, actually, I want you both to chime in and tell us कि जो boundaries होती हैं, जैसे उन्होंने बताया, that it is also my responsibility if I've seen something that I want to warn this person, but I also have to balance it out. So, you know, the blow is softened a little or that person does not, you know, get scared
to seek answers or do the right thing. So when it comes to matchmaking, and say for example the astrologer has already seen that this is a marriage that is not going to work out and they can wait till, but the boy and girl, they are adamant that no, we are going to make it work, at all odds. And just now you gave that example of the boy who was doing drugs. So where should the astrologer draw the line, and what advice do you give to people then? अभी जैसे निकिता ने बोला कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपके भाग्य में होना चाहिए। आपको एडवाइस मिल रही है, बट अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, वो भी तो आपके भाग्य में ही आएगा ना। आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपकी डेस्टिनी और आपके कर्मास ने आपको वो स्टेप लेके जाना था। आपको पता है कि इस रास्ते पे जाके आप खाई में गिरोगे, बट फिर भी लोग चलते हैं ना उस रास्ते पे, बिकॉज उनके कर्मास और उनकी डेस्टिनी उनको वहां लेके जाती है। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ। बहुत बार पेरेंट्स आते हैं, दे सेड की कुंडली मैच नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? बिकॉज हम बोलते हैं दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अगर आपके बच्चे को पसंद है, वो जाके पंडित को बोलते हैं ये ले 500 रुपए ले और कोई उपाय बता दो, रेमेडी बता दो। तो आजकल क्या है, कई बार लोग आके बोलते हैं कि क्या हमें कुंडली मैचिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आई ऑलवेज से कि इट डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ। अगर आपको विश्वास है तो डेफिनेटली जाना चाहिए, बिकॉज अगर आप नहीं जाओगे तो आपके माइंड में हमेशा चलता रहेगा कि मैंने कुंडली मैच नहीं कराई और आज मेरे साथ ये हो रहा है। और अगर आपको बिलीफ नहीं है, अगर आपको उसमें बिलीफ है, देन गो इट विद दिस। बट सबसे पहले अगर आपको भरोसा है तो फिर आप पूरा करो, नहीं है तो फिर आप जाओ नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं करो। और बहुत बार ये केस भी हमारे सामने आता है निकिता, कि जैसे लोग कहते हैं कि मांगलिक है, तो क्या मांगलिक की शादी मांगलिक से Shalini, चाहिए? that is my question. You Okay. can't take it away. Actually, Yeah, this manglik, this marrying the tree, marrying a cow or whosoever. And this is my question I want to ask you because I've grown up watching movies around it. अच्छा, पेड़ से शादी before this answer, like, can I ask something? yes, yes, of course. Okay, अब जैसे मान लो आप ही की मैं बात को और आगे लेके जाता हूँ कि पत्री नहीं मिल रही, बॉय एंड गर्ल स्टिल दे आर विलिंग Yeah. टू लिव टुगेदर, और पेरेंट्स भी करना चाहते हैं, बट वो इतना बिलीव करते हैं हॉरोस्कोप में, तो वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते उसकी वजह से, एंड दे डू नॉट वांट टू लीव द गर्ल और अ बॉय और अ मैच Yeah. और अ फैमिली। अब उसमें अगर शादी हो जाती है, सो व्हाट ऑल एफर्ट्स लाइक दे शुड बी पुटिंग इन टू रन दैट मैरिज, क्योंकि शादी जो है ना, वो हमेशा मुझे लगता है कि रोज उस पर काम करना पड़ता है, वो हमेशा चलाई जाती है, चलती नहीं। जैसे हम कोई बिजनेस में अपने पूरे एफर्ट्स करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, हम बहुत चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सफ़र करते हैं, फिर जाके वो ग्रो होता है। तो मैरिज इज ऑल्सो लाइक दैट, Right. तो एवरी डे देन वी एडुकेट बॉय एंड अ गर्ल दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट एवरी डे। Right. दैट मीन्स कि जैसे ऐसा नहीं है ना। आप बात अपनी पूरी खुल के रखो एक दूसरे के साथ, यू शुड communication gap should not be there. But this is a हो जाती है वाला example. नहीं होती है, ऐसा हुई है? बहुत होती है। आपके उसमें हुआ है? हमारे उसमें तो क्या होता है, हम तो That गिरते हैं। people were adamant that no, हाँ, it अब was a pati. बहुत बार होता है। अब मान लो लव मैरिज होती है, Yeah. जब लव मैरिज होती है तो वो तो करके आ जाते हैं ना, पथरी थोड़ी देखते हैं, पर कम्युनिटी भी दूसरी होती है, एज गैप्स भी नहीं देखे जाते और सिमिलैरिटीज भी नहीं देखी जाती, वो सिर्फ एक फेरी टेल होता है। Right. गर्लफ्रेंड इज लाइक ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट रोल टू प्ले, वाइफ इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट रोल टू प्ले, सेम एज अ बॉयफ्रेंड एंड अ हस्बैंड। और जब वो रियलिटी में आते हैं देन दे हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि महीने 2 महीने के बाद तो रियलिटी सामने आ जाती कि हाउ एवरी डे चैलेंजेस आर देयर, Right. व्हाट ऑल यू हैव टू टेक इट टू रन द मैरिज, क्योंकि वैसी नहीं रहती। That is a very deeper conversation Yeah. altogether. तो उसमें Like how to run a marriage. या उसमें सिर्फ एक मतलब मैं कहना चाहूँगा कम्युनिकेशन का वो नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ यू हैव टू कीप ऑन गिविंग सरप्राइजेस, you have to spend time with each other, mainly weekly, like whatever you should go on holidays, develop like some sort of activities which keeps you alive. सचिन, मैं ना Obviously, इसके बाद ना आपसे पर्सनली बात करूंगी, डोंट। नहीं, मैं आपको ना यही बोलने वाली थी अभी ही। पिछली बार नहीं तो मैंने मतलब इम्प्रेस किया आपको। पिछली बार इनसे मैंने पूछा आप दोनों आपस में बात करते होंगे, कहते नहीं।
नहीं, अब करते हैं, अभी पूछो ना। नहीं, मैं एक्चुअली इन्होंने ऐसे पूछा, मैंने कहा हम तो अपने अपने ऑफिस में तो शाम को ही मिलते हैं, दिन में कैसे करते हैं, टाइम ही नहीं होता। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने रिजेक्ट किया, मेरे पास है। यू नो व्हाट, वी शुड ऐड दैट क्लिप इन दिस एपिसोड। आई विल अभी पूछो। स्पेशली लुक फॉर अभी करते हैं। तो उसके बाद अच्छा, let's circle back to the Manglik dosh. What is Manglik dosh? सो निकिता, जैसे मैं पूछ रहा था, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो कहते हैं कि मतलब मेरा बेटा मांगलिक है या बेटी मांगलिक है, और एक ये आंशिक मांगलिक है। तो हमें तो वी आर गॉन थ्रू सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ विद फ्रेंड्स, विद इन द फैमिली, कि जब ये एस्ट्रोलॉजिकल मैच नहीं था मांगलिक और नॉन मांगलिक या आंशिक मांगलिक की, तो वो शादी चली नहीं, और कुछ ऐसा हो गया तो हम शायद सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ये बिना मतलब मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी कभी नहीं करने देंगे। तो क्या अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मे बी इन ए लव मैरिज या किसी और सिचुएशन में, तो क्या इसकी रेमेडीज हैं? ये ऐसी शादियां चलती हैं? See, when we talk about the term Manglik, right, it refers to the placement of Mangal in your horoscope. Yeah. And there are certain combinations where it will affect your partner's house or your marriage house or your partnership house. So it's directly affecting that. तो अगर दोनों की एनर्जी वैसी ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेट्स गिव यू एन एग्जांपल, लाइक मे बी समवन इज वेरी अग्रेसिव and the other person is not aggressive, then there's going to be a disbalance, right? A mismatch of energy. And like I said, everything is energy. Everything boils down to energy. आपकी एनर्जी क्या है, और आप जिसके साथ रह रहे हैं या or you want to be with someone, तो उसकी एनर्जी क्या है, वो मैच हो रही है नहीं हो रही है। If it's disbalanced, तो फिर शादी कैसे चलेगी? कोई एक किसी पे भारी पड़ जाए, you wouldn't want that to happen. तो हमें मांगलिक के साथ साथ बाकी स्टार्स को भी देखना पड़ेगा। Well, And we have remedies. See, Mangal is your personality. आपकी personality कैसी है, आपकी personality कैसी है, will they match? ओके, Will तो they match? अगर But मैं- that's just one fact. अगर और मैं- बहुत सारे हैं। अगर मैं आपकी बात से सोचूं तो पूरी पत्री में, पूरी कुंडली में, मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक शुक्र और एक मंगल। सबसे पहले इन दोनों को देखना चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में। फर्स्ट यूजुअली हम देखो पर्सनालिटी देखते हैं, और पर्सनालिटी के लिए मंगल देखना जरूरी है। जरूरी है। जैसे आपका मेक माई लगन है ना, तो सबका लगन होता है। लगन is basically your ascendant. It's Yeah. you. It's your primary house because it defines everything about you and your life, your outlook, the way you are, your approach, appearance, what your tendencies will be. You know, things like that. Whether you, let's just say, have a philosophical bent of mind, or you're someone who likes games, who loves to play, or you're someone who's very emotional as a being. But Correct. that's your core, how you are inside. Correct. Some people are nitpickers. खुरिदते हैं चीजें, वो भी होता है। So, ascendant is who you are, and Mangal usually tells us a lot about your personality. तो वहां से वो मांगलिक का कॉन्सेप्ट आया है, बट इट्स नॉट द ओनली थिंग वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यूजुअली इसलिए कहते हैं सो दैट एक पार्टनर दूसरे पे ज्यादा भारी ना पड़ जाए। दैट इज in layman's terms, इसलिए कहा जाता है। Then do you suggest marrying a tree or not? I don't know anything about marrying trees, so it's not something that I've studied. It's not something that I will suggest. If it comes up at some later time, then I don't know. But तो do मुझे you ऐसा लगता है advise people? कि हमें मतलब इसके साथ साथ में we have to we understand human behavior very well now, because into this profession for almost 16 years, you know, how human behavior is reacting, relationships, and it is like very important. मेरे को तो वैसा लग रहा है कि मुझे इनसे एडवाइस लेनी पड़ेगी कि मुझे मतलब अगर इसका अब ह्यूमन बिहेवियर को हम अच्छे से जानते हैं, अगर इसने ऐसे बात करी है तो आई एम श्योर इसका मंगल अच्छा है या नहीं है, तो मुझे इनके साथ कैसे बात करनी You can tell, you can tell. वन मोर क्वेश्चन। लोग बोलते हैं कि 27 के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, क्या ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, ये बता। देखो, अगर मुझ में गुस्सा है तो the second I turn 28, वो कहाँ जा रहा है गुस्सा? कहीं आप मुझे बताओ। बढ़ेगा ही। सिंपली आप लॉजिकली आप मुझे बताओ कहाँ जा रहा है? nowhere. वो तो बढ़ेगा, वो नेचर में साथ साथ डेवलप हो तो रहा देखो, या तो I do something about it ना, है। Yeah. either I'm going and let's say expending it on exercise, कि मेरी इतनी जो एनर्जी है I need to channelize it Channelize it somewhere, ना? somewhere. तो मैं तो या तो जिम जाऊं, that is very good for someone who's got a good मंगल। आप जाओ एक्सरसाइज करो, or if you think you need to do something about your anger, you go and manage it. These are the ways of doing it. तो वो जैसे ही आपका बर्थ
बर्थडे के नेक्स्ट डे क्या फर्क आया? कोई फर्क नहीं आ रहा। बल्कि मुझे लगता है हम और एक साल मैच्योर हो गए, मतलब हम्म। मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, वो नेचर भी एडाप्टेशन है, इट वो हैपेंस, बढ़ेगी। या आप लीडर हो, यू आर यूज्ड टू लीडिंग इन थिंग्स, तो नेक्स्ट डे सडनली वो कहाँ जाएगी वो क्वालिटी? नहीं जाएगी ना। That's not going anywhere. If you're courageous, if you are someone with a lot of courage and you're like to take the lead, तो वो next दिन में कहाँ जाएगा? It's not going to go anywhere, right? What are some of the, I think this is a myth which has just been busted. So what are some of the myths like this that are associated with astrology in matchmaking? कि 27 के बाद मांगलिक दोष चला I जाता think ये है। ज्यादा सुनते होंगे, तो आप बताओ and I हाँ, can आप compare. बताइए। हम लोग का यही होता है कि बस बहुत बार लोग के आते हैं जिनके मांगलिक है, रिश्ता नहीं हो रहे, तो उनको लगता है कि यार हमारी बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, अब 27 के बाद तो मंगल खत्म हो गया, अब आप नॉन मांगलिक रिश्ता देखना शुरू In करते fact, हो। मंगल का एज तब शुरू होता है। हाँ, then मुझे लगता है sometimes सब people come and सुपरफिशियल say, चीजें, जैसा अपन ने, I think the crux of all this is that half knowledge is worse than having no knowledge. yes. करेक्ट। Is that why do you think people are, evasive of astrology? Because I they think have so. half knowledge. And sometimes people say कि इसके गुण जो हैं बहुत अच्छे मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, अगर मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, बट अगर गुण के नंबर्स अच्छे मिल रहे हैं तो वहां पर आप जा सकते हो। और समटाइम्स पीपल से कि जितने ज्यादा नंबर मिलते हैं वहां पे आपकी मैरिज नहीं चलती है। लोग बोलते हैं कि राम सीता के 36 गुण मिले थे और उनका तो जो हाँ जो करेक्ट, होता है, ये अच्छा सवाल है। ये बहुत बार हमारे सामने क्वेश्चंस आता है। पीपल थिंक एंड पीपल आर सो मच कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। अच्छा, तो अच्छा, इसके ये सवाल जवाब देने से पहले, क्वेश्चन यहाँ है अभी नहीं, एक इसी- है गीतिका और नहीं नहीं, खाकी का। इसी से आगे मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो किसी के 13 गुण मिलते हैं, किसी के 15 गुण मिलते हैं, तो भी मैंने देखा है कि लोग शादी कर रहे होते हैं, उनको कुछ वो स्टार्स की प्लेसमेंट्स देखते हैं, और किसी के जैसे इन्होंने कहा कि 28 मिल रहे हैं, 29 मिल रहे हैं, वहाँ वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं, ये सूटेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। तो हमें समझ में नहीं आता यार, मतलब लोग कहते हैं 17 के बाद जितने गुण मिले उतना अच्छा होता चला जाता है, और लोग 15 गुण में भी शादी करके आते हैं और 28 में भी नहीं करते, तो क्या होता है ये? अच्छा, I'll add only. मुझे तो ये भी नहीं जानना कितने गुण कितने नहीं। गुण है क्या? कौन से गुण? What are these? See, like I mentioned this a little earlier. What happens is that ये जो गुण matching का concept है ना, this is to do with the moon and the nakshatra of the moon. Okay. ओके, तो ये वहां से this concept comes from there. But like I said earlier, ना, there is a better way of matchmaking. Do जब these आप गुण have names? Like what are these goals? No, there's an entire table and calculations are done and then things are matched. So Okay. we can't honestly So get into that. basically 36 parameters that come Yeah. out of Yeah. those Yeah. moon ka positioning. Okay. Yeah. So there is a better updated. Now see, we've also evolved, right? As human beings. So this is a system which has also evolved. So which is why when someone comes to me, I do my detailed analysis based on the planetary positions of both the horoscopes, what I see. That's how I do it. I am not relying on gun matching. I don't do it. And that's how I've been taught as well. Okay. I want to go back to the very beginning because something just popped in my mind. You mentioned in the beginning that you got into astrology because of your personal experience. You mind sharing what that personal experience was? So I've always have a bent of mind towards astrology, always been in awe, but कभी सीखा नहीं, क्योंकि कभी कोई मिला नहीं. So I never found that, right? But I've been into spirituality since the past, say, 12 odd years or so. But what happened in 2020 is that I did a series of, like we're doing right now, I did a series of live podcasts Okay. on my own channel. And it just so happened, not by design, but by default, कि I started interviewing astrologers. Okay. Yeah, I started off with someone who was with me in the Miss Universe pageant, Miss Manisha. She's a very good friend of mine. So I started off my podcast with her and a couple of other people. But there was this huge attraction towards astrology. And that's how I got in touch with a few astrologers, right? And there is someone who I interviewed, and I suddenly realized that, this person is breaking a lot of the myths. His energy is so receptive that I want to learn this.
And it was just that one conversation that triggered the whole thing of this is something that I want to do. This is something that I can do. And then once that happened, one fine day, I said, okay, I want to learn this. And I'm going to learn this. And basis my entire life experiences. So I said, now I'll give you an example about myself, right? So I am never surrounded by groups of people. Never. Because that's my energy, right? And I'm very comfortable in my own company. I've always been since I was a little kid. So this one question was always on my mind. कि when I'm coming back from the school bus, तब भी मैं अकेली हूँ. जा रही हूँ तो अकेली हूँ. But it's not happening with other age groups of people around me, right? So why don't I have this big group of friends? You started seeking answers about your own energy. About my own life. Why is this the case? Right? So it was something that, and then later on someone will say something, but you too don't have so many friends, or you don't have such a big group of people. I said, हाँ, कभी हुआ ही नहीं. क्यों नहीं हुआ? Why is that the case? I mean, you can't say you suddenly grown into an adult, so your thinking changes. This is happening to me since I was a kid, right? So this one question always was there at the back of my mind. Why has this never happened? It's never translated. Everyone else has got this, and everyone around me has always had this big gang group of friends, and I've never had it. Not that I've had a problem with it. But the thing was, I want to know why. And I started studying. So when I got into astrology, it answered it in the and I didn't have to ask that question, that answer was just lying there right in front of me. I try and go back and I try and see what happened when, and it corresponds 100% with what, I've learned. So it's a very simple question, like, why has this never happened? Why am I always so comfortable with my own self? And I don't need anyone, right? I don't need company. I'm not hyperactive. I don't feel alone. That's never the case with me. In fact, I've always felt great being just by myself. So why is that the case? That's a very important planet for me. It's also the same planet which has given me my life experiences. It's the one that controls my profession as well. Mm-hmm. But it's also the one that says you don't need anyone. So for me, some of the questions which has been with me for for 20, 30 years. I start studying and it's answered automatically on its own. So that's what I meant, that it will answer your questions for you without you even asking. It will tell you why. Only if you want to know why. It'll answer all these things for you. And both of you, do you sort of, ask the same questions or seek the opinion of an astrologer while you are, proceeding with your business? Because I think we can't say this enough. Matches are made in heaven, but you people are literally playing the role of bringing those matches together in this world. So you have such responsibility on your shoulders. So, besides all the Kundali matching that is happening, do both of you, personally मैं सबको कहता हूँ कि ठीक है यार, शादी एक ऊपर कहते हैं कि ऊपर से बनकर आई, बट उसको ढूंढना तो पड़ता है. डेस्टिनी है, पर उसके लिए काम करना पड़ता है, तभी वो डेस्टिनी आपकी फेवर में होती है. करने पड़ेंगे ना. एफर्ट्स होते हैं, अदरवाइज वो मतलब आप कैसे पहुंच सकते हैं उस तरह. तो आप जैसे इन्होंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी मतलब वी आर शोइंग लाइट, तो जो उनको चाहिए वी आर शोइंग देम अ लाइट इन द फैमिली कि यार ये वो लोग हैं, आप उसको देखो, एक्सप्लोर करो. उसके बाद तो हम मतलब वी आर हियर टू ऑल फॉर ऑल कोऑर्डिनेशंस एंड ऑल दैट बिटवीन द फैमिलीज. तो बट उसको देखना पड़ेगा. सर ने बोला था तो इतने रिश्ते कराओगे. हमें तो यही नहीं कहता था कि हम रिश्ता कराएंगे. It just happened like you enter into this business. I personally believe कि astrology is like a Google map. आपको कहीं जाना है, आपको रास्ता दिख रहा है कि इसमें hurdles भी आएंगे, इसमें ट्रैफिक भी है, इसमें ये है, बट इफ यू चूज द वे, तो आपको कार तो ड्राइव करनी पड़ेगी ना डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. तो और आपको अगर आप कार ड्राइव नहीं करोगे तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे. ऐसे ही अगर आप कार सेफली ड्राइव नहीं करोगे तो चाहे रास्ता कितना भी प्लेन और ट्रैफिक में हो तब भी आप नहीं पहुंच पाओगे. सेम इज लाइक ए मैरिज, बिकॉज बहुत लोग इसको बहुत डीप स्टडी करते हैं. एज सीन, जैसे मेरे पास कई बार एक फैमिली आती है और वो बोलती है कि मेरे को वो बच्चा चाहिए जिसकी कुंडली के अंदर
सपोज जैसे उन्होंने बोला कि वीनस स्ट्रांग है, किसी को मनी चाहिए, तो उसने देखा कि यार इस गर्ल की पत्री बहुत अच्छी है, जैसे ही शादी होगी आपके बेटे का फ्यूचर आगे बढ़ जाएगा. So people do come to you with outlandish demands Yes, or about astrology as well. sometimes people come कि मुझे वही लड़की चाहिए जिसकी ये ग्रह स्ट्रांग है या जिसका ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि ये चीज मिलेगी तब आपने उसी से शादी करनी है. समटाइम्स पीपल कम टू अस. तो उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई आया हमारे पास, उसने देखा, उसने बोला कि यार मैंने ये पत्री मिलाई है, जैसे बोला कि दोनों एक दूसरे को कहाँ पे जो करेंगे, गैप्स है वो फिल करेंगे, gaps कॉम्प्लीमेंट करेंगे. करेंगे और आगे बढ़ेंगे. मेरे बच्चे की कुंडली में ये प्रॉब्लम है और गर्ल की कुंडली में ये बहुत स्ट्रांग है, मुझे इससे शादी करनी है, आपको कैसे करानी है आप सोचो, आपको उसे कैसे कन्विंस करना है आप सोचो, बट आई वॉन्ट दैट थिंग शुड हैपन. That is such a difficult job to do. आप Sometimes- सोचो कैसे कराना है. समटाइम्स पीपल कम, और उसके बाद क्या होता है जब उनको वो चीज मिल जाती है और उसके साथ आपकी ना लाइफ में एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, फिर आपको क्या लगता है आपके लिए अगर वही चीज प्रायोरिटी थी तो उसके साथ कुछ चीजें, अगर आपने देखा कि उसका ये चीज मुझे स्ट्रांग आया तो साथ और भी चीजें स्ट्रांग होंगी ना, हो सकता है उसको गुस्सा ज्यादा आता हो सकता है उसको कुछ और चीजें, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंगल्स ऑल्सो. फिर आप वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो आपको अगर मैरिज में जाना है और आपको जब आपने पत्री देखी और आपको किसने बताया कि अगर आपको ये चीज मिल रही है बट आपकी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट अगर आप कोशिश करोगे उसको चलाने के लिए तो वो चलेंगी. अगर आपको, मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर कैन गाइड अस कि दिस इज द वे, इसके अंदर अगर आपका ये ग्रह वीक है या आपको ये आएगी और आप उस पर एफर्ट्स करोगे तो डेफिनेटली लाइफ कैन बी स्मूथ. Yeah, like Nikita said, it is only a guiding tool. और मैं भी यही कहता हूँ कि ये जो रिश्ता है, हम मतलब आदमी हमेशा ऊपर मतलब खुद से नहीं उठता, किसी कोई हाथ पकड़ता है तो वो आगे बढ़ता है. जैसे कि सही लोगों का मिलना, सही गुरु का मिलना, सही एटमॉस्फेयर का मिलना, सही गाइडेंस का मिलना, एक गुरु इसी होता तरह से है, एक हमारा गुरु होता है जो आपका मैट्रिमोनियल्स भी है. चार्ट के ऊपर काम करता है. Other than that, no one can change anything in your life. Honestly, no one can change a thing. वो ब्लेसिंग्स जब आती है ना, किसी को वैल्यू नहीं है, बहुत लोगों को वैल्यू नहीं है, लॉट ऑफ पीपल डू, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट रियली वैल्यू ब्लेसिंग्स, बट वो जो गुरु आता है ना किसी की लाइफ में, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, ऊपर ले जा सकता अच्छा, है. अब इसी से एक बात मुझे याद आई. अब देखिए होता है, रिश्ता ढूंढने में हमें कभी कभी 1 महीना लगता है, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं. या तो और उसके बाद जैसे ही उस इंसान को वो रिश्ता मिलता है, तो वो सोचता है यार ये तो बड़ा आसान था, फिर ये तो हुआ ही कुछ नहीं. तुम खुद नहीं किया. तो तब हम कहते हैं यार मतलब हमने इतना समय मतलब आप लोगों के साथ एक दूसरे को जानने समझने में लगाया, आपके बच्चों को काउंसलिंग करी, खुद करी, लोगों से बात करी, और आपको लगता है कि यार कोई वैल्यू नहीं है, और फिर वो बाहर लोग कहते हैं कि यार ये तो हमारी मतलब हमने लव मैरिज है बच्चों की. इट्स लाइक नॉट ट्रू. Come to me. But you know what, Sachin ji, I am so sorry to step in between, but this I think is only Sachin ji's perception, because I happened to be at this one event where so many people came who जिनकी बच्चों की इन्होंने शादियां कराई हैं, जो इनके साथ ऑलरेडी टॉक्स में है अपने बच्चों की शादियों के लिए, and everyone had only good things to say about Sachin and Shalu. Sachin, Shalu, अरे वो तो फैमिली है. Sachin, Shalu, अरे वो तो फैमिली है. अरे I was like, बाप रे, are these people sugarcoating it? Me, being the journalist that I am also asking them questions that what is it that you don't like about this event? You please tell me, just for a feedback purpose, so that I will convey it to them कि अगली बार आप ये चीज बेटर करिएगा. उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए. The only thing that these people are saying that no, you will never meet people like Sachin and Shalu. They are so good and we don't even consider them as professionals. They are a part of our family. They are a part of our family. So Sachin ji, this is your perspective. नहीं, Holding up. I'm तो asking generally. People love you. They adore you. Thank you so much. I think they are very grateful to I'm both of you. very thankful to This everyone really that you were associated with us. हाँ ठीक है, लाइफ में 1-2 लोग सब जगह होते हैं, we should ignore them, we should always see the Yes. good part of. Also, this brings me to the final question. Astrology, 3 of you very strong opinions. Of course, astrology is a guiding tool, but in this day and age, should it be a deal breaker when it comes to matchmaking?
how should young people navigate through astrology now? See, first you need to have faith. If you don't have faith, don't go to anyone who you're seeking guidance from, because it's not going to work. You've blocked yourself out. There's resistance, right? So if you are going to someone, if you are going to a professional, even astrology is a professional, right, who's guiding you. So if you're going, go with faith. Go to someone, again, like I said, do your due diligence. Go to someone who you think is the right person, who's going to guide you. And therefore, that's where that faith will come from. You're not going to just suddenly go and blindly trust anyone, right? Right. I mean, she's called me here only because of the first meeting that I had with her and the things that I've predicted for her, right? So go to someone who knows the subject, understands it. And then when they're guiding you, they will tell you, look, they will tell you if this matches for you, this match is not for you. They will tell you. If your marriage will prosper with so-and-so, they will tell you that. So they're guiding you. If you want to listen, if you want that guidance, then go to someone. Otherwise, don't go. But yeah, it's very important because sorry to interrupt, मैं एक छोटी सी story आपको बताना चाहूंगी कि हमारे एक client थे and he was too much into पत्री. मतलब हमने उनको 400 रिश्ते बताए होंगे और वो एक पत्री मैचिंग कराने के देन ही यूज्ड टू से कि मैं जाता हूँ, मैं इतने पैसे देकर आता हूँ और मेरी पत्री, तो हमने उनको 400 पत्री दी होंगी, उनकी आज तक एक पत्री नहीं मिली. उनकी एक पत्री मिली जब उनका रिश्ता हुआ. दे विजिटेड अस, वो हमें जब वेडिंग कार्ड देने आए तो देन आई आस्क्ड अबाउट द बॉय एंड दिस. तो जब उन्होंने मुझे बताया कि जो लड़का है वो ही इज फ्रॉम ए प्रोफेशनल फैमिली, फादर इज ए लॉयर, वो हैं, और उसके जो बच्चा है ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली. दे आर स्टेइंग इन ए अपार्टमेंट, फ्लैट में रहते हैं और फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है. बट मेरे पंडित ने बोला कि कुंडली मैच हो गई है. आई वॉज लाइक शॉक्ड मैन को, बिकॉज मुझे वो मैच बहुत मिसमैच लगा. आई आस्क्ड कि मुझे नहीं पता आपके एस्ट्रोलॉजर ने कैसे पत्री मिलाई है, मैं उस पर कुछ नहीं कह रही, बट जो एज ए मैच मेकर मुझे चीजें दिख रही हैं, दिस इज नॉट द राइट मैच. बिकॉज आप एक बिजनेसमैन है एंड ही वॉज ए वेरी गुड बिजनेसमैन. आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है और जितनी चीजें आप मुझे बता रहे हो उस फैमिली के बारे में, दैट्स अ टोटल मिसमैच. तो वो कुंडली कैसे मैच हो गई मुझे नहीं पता, आपके ने कैसे देखा, बट मुझे लग रहा है कि ऐसी शादियां नहीं चलती हैं एज माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज huge difference. So basically, you were suggesting them against the नहीं वो Kundi तो and कार्ड Bhakti कार्ड आ Usman. चुका था, आ हम चुका था. डिस्कस कर रहे थे और इवेंचुअली फिर कुछ मतलब आपको मेरा पर्पस है कि आप एक राइट एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जो उसने आपको गाइड करा है वो सही किया है या नहीं किया है. तो और हुआ क्या, आफ्टर 6 months फादर कॉल्ड मी अप कि शालू मेरी बेटी का डिवोर्स हो गया. यू वर राइट, क्योंकि जो चीजें तुमने मुझे बताई सेम थिंग्स आई फेस्ड. अब तो मेरा जो है ना एस्ट्रोलॉजी से विश्वास ही उठ गया है It was a बहुत बार. बिकॉज क्या होता है, आपने अगर राइट एस्ट्रोलॉजर को चूज नहीं किया, एस्ट्रोलॉजी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ, बट आप किसके पास जा रहे हैं. लोग क्या सोचते हैं कि यार ये मेरे पड़ोस में है, ये कम पैसे ले रहा है, लेट्स गो टू दैट पर्सन. समटाइम्स करते हैं लोग, करते भी हैं. हाँ, और बाद में फिर बोलते हैं कि चल यार मैं वहां जाऊंगा, वो तो हर पत्री के इतने पैसे लेगा. या तो आप भरोसा नहीं करो, तो अगर आपको राइट पर्सन चाहिए तो आप अपने बच्चे के लिए पैसे भी खर्च करो. हाँ, देखो क्वालिटी word of mouth. always come with experience. एक्सपीरियंस. So जहाँ you should spend money like on this. Word of This is something very important rather than If spending you are- money on a huge big fat wedding. हाँ, बिकॉज Marriage. पीपल आर रेडी टू स्पेंड द मनी ऑन 3 hours शो जो वेडिंग है, बट दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड मनी ऑन मैरिज. things that matter. On a matchmaker Whatever or on a Yeah. astrologer. You will spend on what you value. If Yes. you don't think something is valuable, Yeah. या you will not spend them. Listen, people value you. Okay. No. नहीं, don't start that. मैं तो I just told you. Thank you. People value आई you. जस्ट वांट Yeah, टू not से कि negative. अगर आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर चाहिए तो आपको चूज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कौन है, कैसा है, आप उसके बारे में स्टडी करो. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है. एंड वन मोर क्वेश्चन कि ना सेम कुंडली को 2 पंडित डिफरेंट ओपिनियन कैसे देते हैं. हमें ये प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं. गर्ल वालों का पंडित बोल रहा है दिस इज द परफेक्ट मैच, इससे अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता. बॉय वाले का पंडित कह रहा है दिस इज द वर्स्ट मैच, इससे बुरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता. और वो क्लाइंट हमें बोलता है शायद आप ही झूठ बोल रहे हो, मेरा पंडित तो बोल रहा है अच्छी पत्री एक्सक्यूज है. और मुझे पता है कि वो सामने वाले के लिए पत्री ही इंपॉर्टेंट है भैया, एक्सक्यूज नहीं है. कई बार हाँ, हम तो जो है ये- पंडित की भी कन्वर्सेशन कराते हैं Nice. एंड ये कराते हैं. But so see, sometimes that can happen because there are different schools of astrology also. Second right? opinion लेना चाहिए.
आप डॉक्टर के पास जाते तो लेते हो ना सेकंड ओपिनियन. Second So if you are in a situation, वैसे ये ज्यादातर नहीं होता है, but sometimes if that's happening, आप ले लो ना second opinion. It's, अच्छा, like मैं- I said, it's an important, really important event in your life, right? So ले लो second opinion. अच्छा, मैंने आपको अपना हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस बताया, तो आप मेरा सेकंड ओपिनियन वाले डॉक्टर बनोगे? I don't mind. इसका आंसर फिर मैं आपको बात ही I नहीं. will, that's one thing I don't like, I don't believe in, I never preach is to scare someone. You know, I don't believe in this whole fear mongering. I also don't believe in ये कर दो, ऐसे कर दो, वहां से ये बरसेगा, वहां से I don't even do this. Okay. So there's no shortcuts with me because that's not how I've learned and that's what I don't believe in. Okay. And but I also don't Very say कि नहीं cool. अभी ये भी ऐसा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा and you will fall into a ditch. Nothing like that. Okay. So it's both. I'm very हाँ, strict. because- Needs to be because- balanced. बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है, मुझे लगता है कि पर्सन बहुत नेगेटिव रहता है. अभी जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि यार इसकी तो कुंडली में लिखा है कि इसकी तो शादी होते ही इसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी या वो, तो वो गर्ल शादी से ही डर जाती है. दिस थिंग शुड नॉट बी देयर, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज एक हेल्दी वे में बताना चाहिए. Let me also remind you, we are talking about matchmaking, we are talking about marriage, we're talking about everything, but there are certain people who do not have the combination for marriage. That exists. ओके So if you have it, if you have been told, go take second, third, fourth opinion, that's up to you. But if you have that combination, then you should have the courage to accept it also. I wish I had that combination. I'll ask for it. Please check and tell me. अच्छा है, ऐसा होता है. होता है, बिल्कुल Okay. होता है. We tell people sometimes अगर हमको दिखता है कि this person is not, like the person doesn't have the desire for marriage, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो because of societal norms? So Right. होता है. Some Okay. people have the desire. Some people very young want to get married. It's something they love and they adore and they want it in their life. Some people don't have it. So there's everything. It's a mixed bag. But you should be ready to accept it also if that is true for you. If it is true for you. और That ऐसे exists. और ऐसे लोगों की भी रेमेडीज है, जैसे किसी का एक बार डिवोर्स हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अगेन लाइक ही और शी इज विलिंग टू. एक टेक्निक होती है जब हम बोल सकते हैं कि आपकी 3 टूटेंगी, आफ्टर दैट योर मैरिज विल फ्लरिश. ऐसा भी होता है. तीन है. तीन टूटने में ही Yes. वो खुद टूट जाते हैं. Now, how you leave some questions for, let's call her again and let's, discuss some more. इतनी अच्छी बातें हो रही है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है और जानने का मन कर रहा है. And we are very happy to invite you today, and you so it's a pleasure to have you today and to know more about you, like Miss India and then turned astrologer, spiritual, altogether very different. And thank you so much. From the outside it seems very interesting ना कि हम ग्लैमर से आप मतलब एस्ट्रोलॉजी कैसे कर रहे हो, but actually they're two sides of the same coin. Uh, Yeah. So for me it's been very eventful and I'm very happy with it. I would love to know more about it in my personal astrology sessions, given she's not scared me enough for today. no, the way I think so, like she has given an example, so she'll guide you in a very positive way. I think so too. वो सीधा नहीं बोलेगी कैंसर होने वाला, जाके इलाज कराओ. Why didn't she That mention cancer? Stop scaring me. I gave an example, which is a true example, तो अभी तो मैं भी जाने वाला हूँ इनके पास. Actually, at this point, I should actually go ahead with my CTA. So, viewers, if you have any astrology-related questions that you want to know more about, and you specifically want us to cover and you want Nikita to talk more about, just leave it in the comments so that we come back with another episode on astrology. Not just maybe matchmaking, maybe relationships in general or love in general. You never know. So thank you so much, everyone, for this insight. Thank you so much. Thank you. Nikita. Thank you Thanks so much much. for being a part of Webcast. You two are lovely and people value you. Please. Thanks. People do. It was just a question. To our viewers and listeners, we'd love to hear your thoughts. Do you believe in astrology when it comes to relationships? Have you or someone you know made a major life decision based on astrology? Just tell us in the comments, and if you have any questions, do comment them as well. Until next time, this is Geetika Mishra signing off from Webcast.